Now, when I talk about WhatsApp automation, it's not only message delivery. Through task delegation, you will be able to send reminders to your teammate for all the pending tasks. Hi, as a business owner, आप एक दिन में कितना टाइम वेस्ट करते हो अपनी टीम को काम देने में और फिर उनसे फॉलो अप करने में कि उन्होंने वो काम किया या नहीं किया? आप कितना टाइम लगाते हो अपने वेंडर से फॉलो अप करने में कि वो कब मटेरियल डिलीवर करेंगे? आप कितना टाइम लगाते हो अपने क्लाइंट से फॉलो अप करने में दैट व्हेन दे विल डिलीवर द पेमेंट टू यू? आई यूज्ड टू स्पेंड माय एंटायर डे इन जस्ट टेकिंग द फॉलो अप्स from my team so that they could get the work done, right? From my clients so that I could receive the payment on time. And I used to call myself Chief Follow-up Officer. Somebody who is busy entire day doing nothing but just taking follow-ups, and because of that busyness, not able to grow the business. Are you also a Chief Follow-up Officer? Tell me, how much time do you spend in managing a team? In this video, I am going to open your eyes to make you understand on how can you shift from being a CFO to CGO. Because I have been through that journey. I used to spend 9 to 10 hours in just managing my business, just firefighting. And now I have reached a stage where I am helping students in 15 countries by just investing 1 hour per day. Do you want to know the secret sauce in the entire process and how did I do it? उसके लिए पहले 2 टाइप के टास्क को समझो। एज अ बिजनेस ओनर हम 2 टाइप की एक्टिविटीज करते हैं। कौन कौन सी? पहली एक्टिविटीज है, पहली टाइप एक्टिविटीज का नाम है मैनेजरियल टास्क्स। यू नो दीज एक्टिविटीज व्हिच कीप्स यू बिजी, व्हिच कीप्स योर बिजनेस रनिंग, बट दीज एक्टिविटीज डू नॉट ग्रो योर बिजनेस, दीज एक्टिविटीज डू नॉट डबल योर प्रॉफिट्स। फॉर एग्जाम्पल, यू आर मैनेजिंग योर प्रोजेक्ट्स, यू आर मैनेजिंग योर टीम, delegating the task to your team, checking the inventory whether the material is available or not, right? Checking the accounts, doing the payment follow-ups. All these activities are called managerial activities, which keep all of us busy, and because of which we do not have time to grow our business. Tell me in the comment box, how much time do you spend every day to perform these kind of managerial activities in your business? I'll be honest, I used to spend 8 to 10 hours in these activities. Now I don't invest any. Everything is automated. But I want you to tell me in the comment box right now. Done? Okay. Second type of activity is called growth-oriented activities. Like business automation. 1 hour invested in automating your business saves 1 month of your organizational time. Implementing CRM so that you can generate and track more inquiries. Using WhatsApp automation to send payment reminders. Implementing task delegation tool to delegate the task and getting work done without running after your team, right? Building a great website, hiring great employees. All these activities directly boost your business and your profits. But unfortunately, my friend, you do not have time to do all that. Why? Because you're stuck in those managerial activities which I just talked about. Now, this brings us to Pareto principle, which is called 80-20 rule, which says that 20% of your efforts bring 80% results to you, and 80% of your efforts bring only 20% results. अब जो 20% efforts हैं, जिससे आपको 80% results आते हैं, they are called GOTs, growth-oriented tasks. And the activities in which you are spending most of your time, which are managerial tasks, they do not give you any results and any growth. So, सबसे पहले अपने माइंडसेट में ये क्लियर कर लो कि मुझे अपने आप को मैनेजरियल एक्टिविटीज से शिफ्ट करके ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज में आना है। पैरेटो प्रिंसिपल में जो 80% टाइम मेरा फायर फाइटिंग में जा रहा है, उसको रिवर्स करके मुझे 80% टाइम अपना बिजनेस की ग्रोथ में लगाना है। एंड देन आई टेल यू व्हाट आर फ्यू टिप्स एंड टूल्स व्हिच यू कैन यूज to automate your entire team management so that you can also get the freedom from firefighting. Before I share with you the same, I hope you have commented below on how many hours you spend in day-to-day firefighting. Make sure guys you subscribe the channel, you hit the like button and you click on the bell icon as well. Every week I'm bringing golden content to help you upgrade your business. Now you want to shift from Chief Follow-up Officer to Chief Growth Officer.
just like I have shifted myself. What are 3 systems which I use out of many other systems which I use? These 3 systems helped me to save my time and to become a chief growth officer. First system is task delegation system. It is a Google form which is on my mobile. मुझे किसी भी टीममेट को सुबह 5 बजे, रात को 12 बजे कभी भी काम देना होता है तो मैं उसे कॉल नहीं करता, ना ही मैं व्हाट्सएप पे वॉइस नोट ड्रॉप करता हूँ. आई सिंपली ओपन दैट गूगल फॉर्म, आई चूज दैट टीममेट, आई राइट द टास्क, आई चूज द टारगेट डेट, आई क्लिक ऑन सबमिट. उस टीममेट को अपने आप व्हाट्सएप पहुंच जाता है. एंड हियर द सेकेंड सिस्टम इज व्हाट्सएप ऑटोमेशन इटसेल्फ. टास्क डेलीगेशन के साथ अगर आप व्हाट्सएप ऑटोमेशन यूज करोगे तो आपने काम तो दिया, काम ईमेल पे भी जाएगा, बट अगर व्हाट्सएप पे काम जाने लग जाएगा तो आपके टीममेट्स व्हाट्सएप पे यूज करते ही करते हैं. उन्हें व्हाट्सएप पे काम जाएगा, दे विल रिप्लाई बैक एंड दे विल कंप्लीट देयर वर्क. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट व्हाट्सएप ऑटोमेशन, इट्स नॉट ओनली मैसेज डिलीवरी. थ्रू टास्क डेलीगेशन यू विल बी एबल टू सेंड रिमाइंडर्स टू योर टीममेट फॉर ऑल द पेंडिंग टास्क. अब वो काम उन्होंने कंप्लीट किया या नहीं किया तो उसकी एनालिसिस कहाँ से आएगी? इसी सिस्टम में एक टास्क डेलीगेशन डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको पता चल जाता है कितने टास्क कंप्लीटेड, कितने टास्क पेंडिंग हैं, कितने टास्क ड्यू हो चुके हैं, और हर एक टीममेट की क्रिस्टल क्लियर परफॉर्मेंस सामने आ जाती है. एंड बिकॉज ऑफ विच आपकी जो टीममेट्स हैं दे बिकम अकाउंटेबल, एंड इंस्टेड ऑफ यू रनिंग आफ्टर देम दे रन आफ्टर यू कि बॉस मेरी कल की डेडलाइन है, प्लीज मुझे बता दो इसमें क्या करना है. और इससे पहले क्या था, आप उनके पीछे भाग रहे थे. नाउ दे विल मेक श्योर दैट दे कंप्लीट द वर्क बिफोर द डेडलाइन and they go even out of the comfort zone to get it done. And the accountability, the pressure, the responsibility from your shoulder goes to your employee shoulders, and that's where you get freedom from follow-ups from your employees, right? And then next solution here is WhatsApp automation. You can use that for sending payment reminders to your clients. You can use that for sending reminders to your vendors for material delivery, and you can use that for sending reminders of tasks to your teammates as well. Once you start using it smartly through Google Sheet, then you start saving all the time of all the follow-ups that you take from the clients for all the follow-ups, right? And our students who are using the payment reminder tool, which is integrated with WhatsApp, it has started collecting payments 70% faster than before. And it has resolved the problem of cash flow permanently just by implementing one system in their business. And third system is Intranet. Intranet क्या चीज़ है? ये एक Google साइट है जो only you and your teammates, आप और आपके teammates ही एक्सेस कर सकते हैं, और वहाँ पे आप अपना Google फॉर्म, Google शीट, बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट वाले हैं डिपार्टमेंट वाइज आप उसमें ऐड करके कैटेगराइज करके लगा सकते हो. क्या बेनिफिट है? मान लीजिए आप किसी वेडिंग में गए 2 या 3 दिन के लिए. अब आपके टीममेट को एक या 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे और वो आपके कंप्यूटर में पड़े हुए हैं. वो आपको बैक टू बैक कॉल कर रहा है, बॉस मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे क्लाइंट को भेजने हैं. यू गो आउट ऑफ योर वेडिंग, यू ओपन योर लैपटॉप एंड यू सेंड द डॉक्यूमेंट. बट उसके बजाय अगर आपके सारे बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स एक प्रॉपर पोर्टल में, इंट्रानेट में होते तो आपका टीममेट उस पर जाता, डॉक्यूमेंट को एक्सेस करता और वो अपना काम कंप्लीट कर लेता. सो इंट्रानेट इज बेसिकली डायरेक्टरी वेयर यू ऑर्गेनाइज बिजनेस डेटा डिपार्टमेंट वाइज, और आपको सारे बिजनेस डेटा का एक्सेस रहता है, बट योर एम्प्लॉइज एक्सेस द डेटा बेस्ड ऑन विच डिपार्टमेंट दे आर इन. नाउ आई हैव क्रिएटेड इंट्रानेट फॉर माई सेल्फ and it started saving all my time, and that's how I shifted from chief follow-up officer to chief growth officer. I can still recall कई साल पहले की बात है. I was with my family for 3 days trip. My parents, my sister, my brother, everybody was enjoying in that family trip. और मैं लैपटॉप ओपन करके अपनी टीममेट को कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा था. My dad, he was seeing कि केवल हॉलीडे पे भी आया हुआ है बट अपना काम भी कर रहा है. My daddy shouted at me. He said, केवल या तो लैपटॉप बंद करो, हमारे साथ एंजॉय करो, या फिर बैग पैक करो और अपने ऑफिस जाओ. हमारे साथ टाइम मत स्पेंड करो, अगर फोकस नहीं करना है हमारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना. एंड आई वेरी प्राउडली टोल्ड माई डैड कि नहीं डैड, मैं तो बिजनेस ओनर हूँ, मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ. वी आर सपोज टू बी बिजी. एंटरप्रेन्योर की यही लाइफ होती है 10-12 घंटे काम करते रहो. माई डैडी स्टार्टेड लाफिंग एट मी. ही सेड, माई सन, यू डोंट इवन हैव अ टीम ऑफ 10 people and you're so busy that you're not able to spend 2 quality days with your parents. ये कैसा बिजनेस है और ये कैसे एंटरप्रेन्योर हो आप? एंड दैट काइंड ऑफ स्ट्रक मी. आई अंडरस्टूड दैट आई वाज नॉट अ बिजनेस ओनर, आई वाज अ चीफ follow-up officer. And I said, if I want to do something great, if I want to build a business that grows without my presence, I need to implement something smart. And at that time, I used to work with companies like Panasonic,
ThyssenKrupp, all these big MNCs. They had this concept called Intranet, where an employee, whenever he or she want to do any entry, he or she has a screen where he or she can make attendance, leave application, what activity he or she has done, and manager can see the performance, and vice versa for manager to the CEO as well. And I said I also want to have something like that. So Google site पे हमने एक इंट्रानेट बनाया, अपने Google फॉर्म Google शीट लगाए, सारे रिपोर्ट्स लगाए, और उसके बाद लाइफ सेट हो गई है. अगर मैं 2 हफ्ते भी कहीं पे जाता हूँ, लास्ट ईयर में 2 हफ्ते धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में था, I did not receive a single call from my team. I was the one who's calling the team and asking them, is everything fine? Although I could see everything on intranet, on my team's performance dashboard. But before implementing intranet, I used to receive minimum 15 to 20 calls from my employees. And I used to call at least 15 to 20 times from different teammates. But now this scenario has changed forever. I was in Goa with my family. I took my entire family first time to Goa. We stayed there for 1 week. And my parents, my brother, everybody was surprised कि केवल आपको कोई कॉल नहीं आया टीम का. I showed them my mobile with all the dashboards कि देखो मेरी टीम की परफॉर्मेंस मुझे पता चल रही है इस टास्क डेलीगेशन डैशबोर्ड से. देखो इस इंट्रानेट से मेरी टीम ऑफिस में बैठे बैठे सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर सकती है. And that is what my purpose is for India and for you guys. I also want you also to shift from Chief Follow-up Officer to Chief Growth Officer. और वो कैसे होगा? For that you need to attend my upcoming Business Automation Masterclass जो मैं इस वीक कर रहा हूँ. In this 2 hours of masterclass, you will discover on why you are struggling to manage your business and how you can shift from day-to-day firefighting to doubling your profits, and how can you get the freedom from operations with Google Form, Google Sheet and WhatsApp automation. उस वर्कशॉप में आइए और अपनी लाइफ, अपने बिजनेस, अपने रिलेशनशिप्स, अपनी टीम, अपने कस्टमर्स, सबकी लाइफ चेंज कर दीजिए. Because this masterclass has impacted more than 50,000 students in India, and out of which 4,000 students in India have automated their businesses end to end from 150 cities in India. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, make sure you click on the subscribe button. इस वीडियो को अपनी सारी टीम के साथ, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो आपको बोलते हैं कि मैं आपके बर्थडे पे नहीं आ सकता बिकॉज मैं बिजी हूँ, राइट? मैं वो ट्रिप पे नहीं जा सकता बिकॉज मैं बिजी हूँ. बिकॉज अगर आप अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं तो आपकी ज़िंदगी अस्त व्यस्त है. तो ये वो टाइम है जहाँ पे आपको बिजी नहीं होना है, आपको प्रोडक्टिव होना है. और उसके लिए आपको टास्क डेलीगेशन इंप्लीमेंट करना है, इंटरनेट इंप्लीमेंट करना है. टू गेट द फुल क्लैरिटी मास्टर क्लास में आइए एंड लेट्स स्टार्ट ऑटोमेटिंग योर बिजनेस. टेल मी व्हाट वाज द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो. Do you really want to shift from CFO to CGO? If yes, make sure you like this video and keep watching my upcoming tutorials as well. With that, signing off, Kewal Kishan, somebody who is genuinely caring on helping you grow your business. All the best, and let's automate and grow your business. Bye-bye.